very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies and revised your previous lessons. Today, we are going to do our chapter 9, which is Introduction to Data Science. So, without wasting any further time, let's begin our new chapter. The name of a chapter is Introduction to Data Science, and topics which we will learn here are Introduction to Data, Sources of Data, what is data science, why is data science needed, components of data science, applications of data science, career opportunities, purpose of learning data science, data visualization, and career in data science. Now, the present era is a technology-driven era, and a huge amount of data is being generated every day. Now, ये जो data है is being used for extracting useful information जो help करता है in making human beings lives better and more comfortable. Now, this chapter introduces the concept of data science with real life examples. Various components and applications of data science are also being discussed in this chapter along with the various career opportunities in the field of data science. Now, every day through various means of our lifestyle, a tremendous amount of data is generated. And ये जो data है, it is being used for extracting useful information जो help करता है human beings की to live better and more comfortable. Introduction to data, raw facts, abbreviations या फिर जो measurements होते हैं, they are all data. Now they are gathered या फिर produced from a variety of sources. It can be found in variety of media जो include करते हैं numerical, textual, charts, audios and videos. Now जब भी हम work करते हैं with data and figures, figure out what it means, हम learn करते हैं कुछ important things and get useful ideas. ये help करता है हमारी to make smart choices and solve problems. Now data gives us the information जो हमें needed होती है to study and understand things better so that we make better decisions. Now ये essential है in understanding patterns, trends, links and for correlations because ये enable करता है organizations को to take well informed actions and also achieve better results. ये important है in variety of sectors जैसे business, science, healthcare and technology. Now information in general इसको हम classify करते हैं as classified या फिर organized data that has some significance value for the user. Type of data, हमारे पास various type of data available है. They are broadly classified into qualitative and quantitative categories. Now let's discuss through example. Qualitative data, ये एक descriptive या फिर non-numerical nature का data होता है. It is often used to represent qualities या फिर characteristics. इसमें होता है जैसे colors like red, green, emotions like happy, sad, types of fruit like apple, orange, and it can be further divided into two subtypes. जैसे हमारे पास types of data आ गई qualitative, quantitative. Qualitative में we have normal and ordinal and quantitative में we have discrete and continuous. तो नॉर्मल डेटा, नॉर्मल या फिर नॉमिनल डेटा जो है ये काइंड ऑफ डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है जिसको जो यूज करता है लेबल्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स टू डिस्क्राइब थिंग्स. सम एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल डेटा आर जेंडर ऑफ अ पर्सन, सिंबल ऑफ रुपीज या फिर डॉलर, कलर ऑफ द आई. ऑर्डिनल डेटा जो होता है ये एक इंफॉर्मेशन है जो कैटेगराइज करती है चीजों को बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर ऑफ रैंकिंग जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. इट डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नंबर या फिर जनरल सेंस ऑफ ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल देयर आर थिंग्स जैसे रेटिंग द फूड यू ऑर्डर या फिर रैंकिंग इन द क्लास. क्वांटिटेटिव जो होता है ये डेटा कंसिस्ट करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट इन काउंटिंग. नाउ इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स. पहला आता है डिस्क्रीट डेटा. डिस्क्रीट डेटा रेफर करता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन को जो सिर्फ स्पेसिफिक या फिर सेपरेट वैल्यूज ही लेती है. नाउ इट इज लाइक काउंटिंग होल नंबर्स जहां पे यू कैन नॉट हैव फ्रैक्शंस और डेसिमल्स. एग्जांपल्स इंक्लूड करते हैं नंबर ऑफ पेट्स दैट यू हैव और नंबर ऑफ सिबलिंग्स यू हैव. Continuous data ये एक information होता है that can take any value within a range or interval. Now it is like measuring with a ruler जहां पे भी you have fractional या फिर decimal values. Example include करते हैं height, weight या फिर temperature जहां पे there is wide range of possible values. Now we have an activity, write QN for quantitative and QL for qualitative data. Now identification number ये हमारा हो गया QN, height QN, blood group QN, weight is also QN, age QN and emotion QL. Now where data is used, data को हम यूज करते हैं various real world applications पे. Here are 5 examples. Business analytics, तो business analyze करता है sales, customer behavior and market trends ताकि वो अपने business decisions ले सके और strategies create कर सके. You must have noticed that rates of
Ride sharing companies like Uber or Ola are hired during peak hours. Now, this is due to the business strategy and this is done after data analysis. Healthcare डेटा को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है मेडिकल रिसर्च के लिए, पेशेंट रिकॉर्ड्स के लिए एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट्स, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड एनहेंस हेल्थ केयर आउटकम्स. वेरियस सोर्सेज इंक्लूड करते हैं डायग्नोस्टिक टूल्स, medical equipments, instruments, and internet services that are distributing data across a healthcare network. फाइनेंस डेटा को यूज किया जाता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर रिस्क एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फ्रॉड डिटेक्शन, प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड्स. डेटा प्रोटेक्ट करता है हमारी कंपनी को अगेंस्ट पोटेंशियल साइबर क्राइम्स और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स. ये ऑल्सो मैनेज करता है कस्टमर डेटा टू कीप अ चेक ऑन मार्केट इवेंट्स. ट्रांसपोर्टेशन डेटा हेल्प करता है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में, नेविगेशन एप्स में एंड लॉजिस्टिक प्लानिंग में टू ऑप्टिमाइज रूट, रिडक्शन कंजेशन एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी. गूगल मैप्स जो होते हैं वो ट्रैक रखते हैं ऑफ ट्रैफिक, गाइड करते हैं करेक्ट रूट्स इन रियल टाइम इज वन सच परफेक्ट एग्जाम्पल. वेदर फोरकास्टिंग डेटा फ्रॉम वेदर स्टेशन, सैटेलाइट एंड सेंसर्स कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं टू प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न, इशू वार्निंग्स एंड असिस्ट करते हैं इन डिजास्टर मैनेजमेंट. Many things in the environment affect करते हैं हमारी हेल्थ को. तो people who have asthma, allergies and wheezing need to consider things जैसे humidity, temperature, air quality या फिर pollen levels. Now they can stay informed about changes in the weather या फिर air quality that might affect their health using the predictive weather models. Now ये जो models है ये help करते हैं to know what to expect and take necessary precautions to stay healthy. Sources of data. Huge amount of data is being generated continuously through various data sources such as long files generate की जाती हैं by customers using mobile या फिर web applications, online purchases होते हैं, in-game player activities होते हैं, social media posts, financial trading platforms and communication between the smart appliances and the connected devices. Now further जो data है वो collect होता है from various sources, उसको maintain किया जाता है tabular forms में to generate data sets. The main source of data are पहला आता है ऑनलाइन शॉपिंग. नाउ यू ऑल यूज शॉपिंग वेबसाइट्स एंड आप परचेज करते हो वहां से प्रोडक्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस. जो आप सबमिट करते हो कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जैसे अपना नेम, एज, जेंडर, एड्रेस. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्टोर होती है उनके डेटाबेस में एंड विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस ये जो वेबसाइट्स हैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है जैसे व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आप नॉर्मली परचेज करते हो, व्हाट एवरेज बजट आपका है एंड व्हाट टाइम डू यू शॉप. यूजिंग द इंफॉर्मेशन ये वेबसाइट्स आपको रिकमेंड करती हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स. ऑनलाइन गेमिंग. चिल्ड्रन जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं दे सी एडवर्टीजमेंट्स रिलेटेड टू गेम्स एंड समटाइम्स स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स एज वेल. एज द चिल्ड्रन गेट रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एज एंड क्लास, डेटा साइंस हेल्प करता है एडवर्टाइजर्स को कि वो डिसीजंस ले सकते हैं ऑन व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट शुड बी प्लेड बिटवीन गेम्स. Online ticket booking. So whenever you do online booking of a flight, bus, train और movie ticket, आप प्रोवाइड करते हो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, एज, जेंडर, एड्रेस एंड जो डेटाबेस है वो इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है along with your travel information and start sending offers and suggestions for your next tour. Social media. You all use many kinds of social media platforms जैसे Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. एंड आप बहुत सारे इवेंट्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हो इन साइट्स पे. समटाइम्स आप वॉच करते हो वीडियो क्लिप्स या फिर यू मेक परचेजेस फ्रॉम दीज साइट्स एज वेल. Again, based on your choice, you get recommendations and suggestions from these portals. Online billing. So आप use करते हो online platform to pay electricity bills, recharge your mobile phones, fill up your vehicles with fuel, buy groceries and do variety of other household tasks. यहाँ पे जो data science है ये help करता है in reminding you dates of billing, offering better plans, planning your budget and many more activities. व्हाट इज डेटा साइंस. तो डेटा साइंस एक इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जो हेल्प करता है हिस्टोरिकल डेटा के साथ. नाउ इट हेल्प्स विद प्रिडिक्शंस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज. इन अदर वर्ड्स आप डिफाइन करते हो डेटा साइंस को एक डिसिप्लिन जो इनकॉर्पोरेट करता है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. नाउ जो इनसाइट्स होते हैं दैट डेटा साइंस जनरेट वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की टू इंक्रीज operational efficiency, uncover new business opportunities, and improve marketing and sales efforts. To understand the concept of data science, let's discuss the following story. Harish had a grocery store with nearly 1,000 different food items in it. Now, during the festival season, उसने purchase किए 500 chocolate gift packs,
to sell. However, only 250 of them were sold. Now, leaving him with a significant loss, next year उसने order किए सिर्फ 250 gift packs based on his previous year experience. Now, he was able to successfully fulfill the customer's requirement and his stock was also clear. It means that this time उसने correctly predict किया कि number of chocolate packets कितने required हैं based on his previous year experience, जिसे हम बोलेंगे data, and earned a profit. Now the same thing is done in data science कि वो observe करता है historical data को with the help of mathematics and science, फिर predictions लगाता है for the future. The information gained through data science help करता है बहुत सारे domains में in decision making and take better steps. मेन पर्पस जो होता है डेटा साइंस का वो होता है टू हेल्प बिजनेस एनालिटिक्स, हेल्थ केयर डोमेन वर्कर्स, सोसाइटी, इकोनॉमिस्ट एंड अदर्स इन मेकिंग बेटर डिसीजंस. व्हाई इज डेटा साइंस नीडेड? डेटा साइंस की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है? So before discussing the concept of data science, let's try to answer the following questions. Do you know how do online shopping websites arrange products on the web page? क्या आपको पता है जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो कैसे प्रोजेक्ट अपने प्रोडक्ट्स को अरेंज करते हैं? डू यू नो कि कैसे वो ऑफर भेजते हैं हमें ऑन आर रिक्वायरमेंट्स एंड चॉइसेस, कैसे रिकमेंड करते हैं? हाउ डू दे बंडल गिफ्ट? हाउ डू दे सिलेक्ट प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक ओकेजन्स जैसे दिवाली, क्रिसमस एक्सेट्रा? कैसे वो ट्रेवलिंग एजेंसीज जो है वो ट्रेवल ऑफर्स हमें ऑफर करती हैं एट द टाइम ऑफ वेकेशन? हाउ डज जो जीमेल है वो हमें सजेशंस देता है जब भी आप ईमेल टाइप करते हो? तो इट इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस जो यूज करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डेटा, sometimes known as big data, to provide useful information. Now, in all the aforementioned scenarios, the historical data is studied through data science software. Now, with the help of that software analysis, जो choices हैं user की, their buying patterns, market requirements and other factors, उनको recognize किया जाता है. Components of data science, हमारे पास various components हैं data science के, जैसे data availability. ये पहला और most important component होता है is the availability of relevant data. Now, if the relevant data is not available, तो आप generate ही क्या करोगे, क्या prediction करोगे अगर data ही नहीं होगा? Data filtering, ये available data होता है, it may have noise या फिर unused information, तो to get right results हमें उसको पहले filter करना पड़ता है before processing. डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि डेटा को एक अच्छे मैनर में अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कभी कभी जो अवेलेबल डेटा है इट मे नॉट बी यूजफुल इन इट्स करंट फॉर्म, तो हमें क्या करना होता है, वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं हम उस पर, जैसे अपस्केलिंग, डाउनस्केलिंग एटसेट्रा. साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो फॉर जनरेटिंग इन्फेरेंसेस एंड प्रेडिक्शंस डेटा साइंस एम्प्लॉय करता है वेराइटी ऑफ scientific methodologies, algorithms, mathematical formulas and statistical ideas. Machine learning, ये एक backbone होता है of data science. It is the process of training a machine to make decisions जैसे human brain. ये help करता है to take predictions about unforeseen या फिर future data. Applications of data science, हमारे पास various application होते हैं data science के, जैसे we have email, online shopping, banking, social media, healthcare, weather predictions, agriculture and traveling. Now, career opportunities. After comprehending data, data analysis, data science and its applications in our daily life, हमारे पास most frequently asked question आता है कि what are the various career paths? Data science को study करने के बाद में हमारे पास क्या क्या career paths होते हैं जो कोई pursue कर सकता है in the field of data science. So you have already learned that use of data science is making an impact in every domain of life. तो include करता है healthcare, agriculture, stock market, space study, education, business analysis and many more. Now consequently ये generate करता है बहुत सारे career opportunities as well. Some examples of career options in the field of data science are data scientist, business intelligence analyst, data mining engineer, data architect, senior data scientist, etc. Data analyst, तो डेटा एनालिस्ट एक स्पेशलिस्ट होते हैं जो यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को टू प्रोवाइड इनसाइट्स. एक पर्सन है विद एक्सपर्टाइज जो कलेक्ट करते हैं डेटा को, क्लीन करते हैं एंड एनालाइज करते हैं सो दैट इम्प्रूव द बिजनेस डिसीजंस लिए जा सकें. बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिस्ट, तो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट जो होता है ये यूटिलाइज करता है डेटा को टू एग्जामाइन अ मार्केट एंड टू आइडेंटिफाई मोस्ट रिसेंट बिजनेस ट्रेंड्स इन देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. ये कंट्रीब्यूट करता है टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ कंपनीज स्ट्रेटेजी शुड बी डेवलप्ड. देन वी हैव डेटा आर्किटेक्ट, तो डेटा आर्किटेक्ट्स क्लोजली वर्क करते हैं विद द यूजर्स, सिस्टम डिजाइनर्स, डेवलपर्स टू प्रोवाइड ब्लूप्रिंट फॉर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स,
to be used in consolidating, integrating and maintaining the data source. सीनियर डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एंटिसिपेटिंग फ्यूचर डिमांड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। डेटा कलेक्शन में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एनालिसिस। बेस्ड ऑन देयर एक्सटेंसिव नॉलेज दे मे एस्टैब्लिश एंड डेवलप न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेसिंग डेटा। डेटा माइनिंग इंजीनियर्स ये जो होते हैं ये समवन जो स्टडी करते हैं डेटा को नॉट ओनली फॉर देयर ओन बिजनेस but also for the business of others. In addition to this, data mining engineer develop करते हैं robust algorithms to aid in the subsequent analysis of the collected data. Data scientists, they have responsibilities of handling large amounts of structured and unstructured data. Data scientist एक person होता है जो gather करता है, analyze करता है huge amount of data to handle data. उनको किसकी जरूरत होती है? Different data storage, data cleaning and data transformation methods की। Now, in the profession of data scientist, computer science, statistics and mathematics को अप्लाई किया जाता है। ये कलेक्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, मॉडल करते हैं डेटा को एंड देन इंटरप्रेट करते हैं आउटकम्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्शनेबल स्ट्रेटजीज फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। Now we have an activity which says find 5 software industries जो हायर करते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड डिस्कस देम विद योर टीचर। तो इसके अंदर हमारे पास आ सकता है जैसे ई कॉमर्स, फाइनेंस, healthcare, marketing and transportation. नाउ पर्पस ऑफ लर्निंग डेटा साइंस। डेटा साइंस को लर्न करने का पर्पस क्या है? डेटा साइंस एक मेथड होता है फॉर एनालाइजिंग, मॉडलिंग एंड डिप्लॉइंग डेटा टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस ताकि वो बेटर डिसीजंस ले सके। ये हेल्प करता है विजुअलाइज करने में डेटा को दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय बिजनेस स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट फ्यूचर फ्रेमवर्क एंड ट्रेंड्स। डेटा साइंस इम्प्लीकेशंस जो होते हैं दे आर नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन trying to grow. Data science useful होता है in giving answers to different types of queries जो हेल्प करते हैं हमें अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। ये जो क्वेश्चंस हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट वुड बी द क्लास ऑफ द गिवन आइटम। नाउ इन दिस कैटेगरी जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द क्लास ऑफ एन आइटम इज आस्क्ड। फॉर एग्जांपल व्हाट वुड बी द क्लास ऑफ गिवन आइटम, जैसे इधर ए और बी। फॉर एग्जांपल फॉर द क्वेश्चन विल यू गो टू द पार्टी टुडे, तो आंसर वुड बी यस या फिर नो। इन दिस कैटेगरी जो आंसर होता है would be in the some definite form. Some more examples of this question is whether the tea is cold or hot, yes or no. Now whether the dog or whether it is a dog or a cat, whether it is an apple or a mango, are you diabetic, yes or no. Now to give answers of such type of question classification algorithms का use किया जाता है। Classification एक method होता है which is used to classify the output into a finite number of classes. Now the number of output classes may be 2 या फिर more than 2. If the number output class is 2 तो classification को हम बोलेंगे binary. Now binary classification and in case हमारे पास more than 2 class हुई तो it is multi class classification. Now is this an outliner? Now outliner का मतलब होता है एक ऐसा object जिसके features जो है वो similar नहीं है to those of other objects in the particular group. Suppose you have a basket containing lots of raw and green mangoes, and if you find a ripe and yellow mango in the bag, then that would be an outliner because the feature will be different from the rest of the mangoes. Now the concept of outliner को use किया जाता है in anomaly detection. Anomaly का मतलब है something that is not normal या फिर different from other objects in the same group. Normally जो data lie करता है एक specific range के अंदर, consider that a person is working in a company and drawing a salary of 70,000 per month. Now अगर आप observe करोगे transaction of 10 billion in his account, so his transaction would be an anomaly. This could be a result of fraud या फिर cyber attack. So these kinds of anomalies जो है हम इनको detect करते हैं with the help of data science. Banking software keeps track of your regular transactions and if something abnormal happens तो वो notify करते हैं customers को and unexpected change in the data pattern indicate करता है that something is abnormal. Some more examples of anomaly detection are: is this mail normal or spam? Seller genuine or not? Reading of the temperature normal? Now the answer of these type of questions anomaly detection algorithms are used. What value will be the output variable contain? Now ये जो type of questions होते हैं इनको पूछा जाता है जब भी output यानी कि target variable continuous होता है which means it may
take one value within a range. For example, अगर आप try कर रहे हो to predict the stock price in a particular company on the basis of historical data, तो जो price है it can be any value जैसे 20, 20.5, 21, 25, 27 and so on. इसका मतलब जो output है is not constrained to a specific value. Some more examples of this kind of situation are: what will the temperature be today or tomorrow? What would the price of a house in a specific area be? How much rain will fall tomorrow? How would the stock price be? What will be the sales of product for next month? Classification algorithms do not work well for these types of problems. Regression algorithms in machine learning का use किया जाता है to answer these kinds of questions. Regression एक मेथड होता है that is based on mathematical formulas and help करते हैं in finding relationship between features of the database. Which technique should be used to group the data? So in some applications you are not aware about variables, output variables के बारे में आप aware नहीं होते हो, so you only know the features. In this case data को हम separate करते हैं by creating different groups on the basis of some parameters या फिर features. For example, consider करो एक box जहाँ पे there are multiple objects of three shapes: triangle, rectangle and circle. Now if you ask 3-year-old to segregate these objects, he will make three groups, one of each shape, but he may not be aware of the names of those groups or shapes. Now it means that कि वो aware तो है different shapes से, that he have different features, but उनके जो names हैं वो उसको नहीं पता. Now for this kind of data clustering method का use किया जाता है. Clustering groups are formed on the basis of feature similarity. जैसे यहाँ पे सारे triangles के features same थे तो उनको हमने एक group कर दिया, rectangle का एक group and circle का एक group. This type of machine learning used in the above scenario is called unsupervised machine learning and इस technique के अंदर output या फिर target variable is not known. Now how to decide the next step? Normally question arise होता है in case of autonomous vehicles, robots and drones, because यहाँ पे जो decision है वो depend करता है external environment पे. Every time they need to work with the external environment. Reinforcement machine learning techniques का use किया जाता है यहाँ पे to solve this kinds of problems. Reinforcement learning is also a type of machine learning in which learning based होती है on rewards and punishment. Let us understand reinforcement learning with the help of an example. Child needs to walk from location A to B. Now, if he takes right step towards location B, he will get reward in the form of appreciation. But if his steps are not in the right direction towards point B, so he will be lost, यानी कि punishment. On the basis of reward and punishment, he takes the decision on his next step. Data visualization. Data visualization एक practice होती है of representing data in a visual या फिर graphical format. Now ये involve करता है using charts, graphs, maps and other visual elements to display information, making it easier to understand, analyze and derive insights from complex data sets. और ये enable करता है quick identification या फिर patterns and trends of data जो add करते हैं in improved decision making. It is like converting numbers into images to make information easier ताकि वो अच्छे से understandable हो. Best example that you have learned is MS Excel charts last year. Data visualization tools. Data visualization tool help करते हैं लोगों को in different areas जैसे business, science, healthcare and finance to make information more comprehensible and usable. Data visualization tools are software platforms जो provide करते हैं उसको एक visual style जैसे graph, chart. Let's learn some of the tools help in visualizing data. हमारे पास आता है Microsoft Power BI. ये गोल होता है of Microsoft Power BI. A platform for data visualization is to help all businesses today to develop a culture of data-driven business intelligence. To do this, ये provide करता है self-service analytics tools that may be used to meaningfully analyze, aggregate and exchange data. ये part है Microsoft tools का and cost-effective solution है for organizations, those who want to manage and understand their data to improve decision making. Tableau as a tool एक software application है that helps people work with and understand their data more effectively by turning it into easy understandable pictures and charts. Now even if you are not a computer expert, आप use कर सकते हो इसको to make decisions, show कर सकते हो data को to others and work कर सकते हो together with a team. Tableau work करता है different types of data के साथ and can even show data as it is happening right now. It is useful for both small groups and big companies to make better choices using their data. Looker ये help करता है analyze करने में हमारे data को and create करने में useful charts and graphs. ये allow करता है business को to make quick decisions
by showing them real-time information on easy-to-read dashboard. Looker जो है वो connect कर सकता है to many different types of databases, making it versatile and used for various data needs. Looker is compatible with various databases without any problems such as Redshift, Snowflake, BigQuery, and support for over 50 SQL dialects. Now we have Zoho Analytics. You can use this special software to make cool pictures and graphs from your data. आप क्या कर सकते हो अपने डेटा को ले सकते हो फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड उसको यूज कर सकते हो टू क्रिएट दीज विजुअलाइजेशन जो हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनीज डिफरेंट पार्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट है टू एक्नॉलेज द enormous potential of data science as we wrap up this chapter to influence the future. Data science will continue to be crucial across a wide range of business and field because of rising data availability and technological improvements. ये enable करता है हमें to make informed judgments, obtain new perspectives, and resolve challenging issues, ultimately resulting in innovation and advancement. हमारे पास दूसरे अदर पीसेस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हेल्प करते हैं टू विजुअलाइज डेटा जैसे SAP एनालिटिक्स, क्लाउड एंड डेमो। Careers in data science. So, data science is one of the most promising fields with numerous opportunities across different industries. जैसे data scientist. Data scientist collect करता है, analyze करता है, interpret करता है large data को to exact relevant information. Data analyst. Data analyst examine करते हैं and interpret करते हैं data extracted from data analysis to reach to a conclusion. डेटा इंजीनियर जो है ये मैनेज करते हैं डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑटोमेट करते हैं फैच एंड क्लीन अप प्रोसेस टू बी यूज्ड बाय लेटर डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट। डेटा आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं और बिल्ड करते हैं प्लेटफॉर्म्स फॉर लार्ज डेटा प्रोसेसिंग ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके डेटा को इनटू इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। देन वी हैव स्टैटिस्टिशियन गैदर करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है डेटा को एंड मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन डेटा। ही शी हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को इन मेकिंग द राइट बिजनेस डिसीजन। लेट्स डू एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज so our first question is tick the correct option. The number of classes in binary classification should be 2. Huge amount of complicated data is called big data. Dash algorithm will be needed to predict the temperature of the next Monday. Regression. Dash have the responsibility of handling large amount of structure and unstructured data, data scientist. Dash learning is a type of machine learning which is based on the rewards and punishments, reinforcement, and Dash can check whether an email is a spam or not, anomaly detection. Let's do true first. Data scientist helps with predictions of the future and optimizing resources. True. Data should be filtered before processing. False. Now, to understand data in a better manner, different visualization techniques must be used. True. If the relevant data is not available, you can generate any predictions. False. Regression algorithms in machine learning are used to answer these kinds of questions. False. And data analysts are responsible for anticipating future demands of the organization. True. Let's do fill in the blanks. Dash is the process of training a machine to make decisions just like human brain, machine learning. Dash is an intelligent decision-making process with the help of historical data, data mining. If the number of output classes is 2, the classification is called binary classification. A dash is a specialist who uses information to provide insights, data scientist. And dash means an object whose features are not similar to those of the other objects in a particular group, outliner. And dash are responsible for anticipating future demands of the organization, data analyst. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.